बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपल से इक्वेशन यूज करना, P इज इक्वल टू C इंटू RT, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, यू हैव बीन गिवन 1 ग्राम, मोलर मास इज इक्वल टू दिस मच इन 450 ml ऑफ वाटर। इन सारे टर्म्स से आपको 1 ग्राम से इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, दिस इज गोइंग टू गिव यू द C, द कंसंट्रेशन। आपके पास दिक्कत आएगी R के टर्म्स में, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू जो आप याद रखिएगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू 0.082 लीटर APM पर केल्विन पर मोल, ठीक है, लीटर APM पर केल्विन पर मोल। इफ यू आर गोइंग टू प्लग इन दिस वैल्यू, तो आपको जो पाई आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ APM, ठीक है। पाई की वैल्यू जो भी आएगी, व्हाटएवर वैल्यू गेट ऑफ पाई, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ APM। एंड व्हाट इज 1 APM इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल? 1 APM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल, ठीक है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको आप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच? 1 2 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। सो व्हाटएवर वैल्यू यू गेट, यू विल मल्टीप्लाई दैट इनटू 10 टू द पावर 5 और वो आपको पास्कल में मिल जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। Rather, if you want a very accurate value, तो फिर आप R की वैल्यू यूज कर सकते हैं 0.08314, this will be liter bar per Kelvin per mole, ठीक है। And 1 bar, it is completely equal to 10 to the power 5 Pascal, ठीक है। You can either use liter ATM वाला या फिर liter bar वाला, it's almost going to be same, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं आने वाला। Can you take 1 more minute and then I will do this question. Please see here guys, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास? 1/185 into 10 to the power 3, है ना। 185 को क्या सकते हैं? 185
into 10 to the power 3 लिख सकते हैं, ठीक है, and divide by 450 ml क्या हो जाएगा आपके पास, 450 ml will be equal to 0.45 liters, ठीक है. Now then we have the value of R and temperature. Temperature क्या है आपके पास, temperature is equal to 273 plus 37 because it should be in Kelvin. This is equal to 300 Kelvin. बाकी आपके पास क्या बचा, 1 into this will be 300. R की वैल्यू क्या ले सकते हैं, R की वैल्यू ले लीजिए आप 0.0834 into 10 to the power 5 ले लीजिए आप, ठीक है. तो 10 to the power 5 बाद में मल्टीप्लाई करना, तो अभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, and this is going to be your answer in past. So now what do we have here, 300 को into लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, and then you have 3 into 8.314 divide by 185 into 0.45 into यहाँ पे 10 to the power 5 minus 10 to and minus 3 हो जाएगा आपके पास, तो 10 to the power 2 आ जाएगा, ठीक है. Now multiply this thing and then you will get the answer. The temperature is 310 Kelvin, right? 310 Kelvin. Yes, sir. अच्छा 27 नहीं 37 है ना, my bad. इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा 310 और this 10 to the power 2 खत्म हो जाएगा आपके पास and you will have देखिए एक बार सब कुछ सही है यानी 310 is as it is 0.834 से 10 to the power minus 3, हाँ ठीक. 10 to the power 3 will go above, it will become 10 to the power 2. 5 minus 3 is equal to 2 और 100 अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 2 0 8.314 divided by 185 into 0.45. Okay, so this is going to come out as 30.9 Pascal. Raise your hand if you got till here or here. A और B step तक अगर किसी का पहुंचा तो please raise your hand. Oh, no one got A or B. A और B step तक भी नहीं पहुंचा किसी का. Okay, fine. Sorry for some. Now, let us move on to the next topic, that is abnormal molar mass. Okay. First of all, understand this topic. What is abnormal molar mass? Let us suppose we are using some qualitative property to calculate the molar mass of a substance. है ना? हर एक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. If we have relative lowering of vapor pressure, or we have elevation in boiling point, depression in freezing point, or we have osmotic pressure, from all of these 4 different qualitative properties, we can calculate and we can determine the molar mass of any substance. Now, the basic idea of qualitative property is that it is dependent on number of particles that we are adding. Now, if you are adding more number of particles, it is only dependent on what number of particles that we are adding. That is why in some of the cases, the apparent number of particles and the actual number of particles is quite different. For example, I'm letting NaCl. I have added 1 mole of NaCl. Apparently, what I see is that I have added how many particles? I have added 6 into, rather I should say the accurate number, 6.022 into 10 to the power 23 particles of NaCl. Okay. Now, when I add this number of particles of NaCl, then I will see some form of RLVP. And इससे आप calculate कर सकते हैं, or you will see some kind of delta TF, or you will see some kind of delta TB, or you will see some kind of phi. है ना, इन चारों में से कोई एक भी colligative property को लेकर आप इसको यूज कर सकते हैं. Now, apparently I have added only this much. लेकिन solution में जाते साथ, as soon as it will reach the solution, it will break apart into Na plus and Cl negative. Now, what the solution is actually experiencing
Here I have 1 mole of NaCl and 1 mole of chlorine negative. That means I have 2 moles of particles. So 2 into 6.022 into 10 to the power 23 particles. This is the actual. This is the actual number of particles that the solution is experiencing. हमें apparently क्या लग रहा था? हमें apparently लग रहा था हमने 1 मोल डाला है तो 6.022 into 10^23 particles होंगे. But by the virtue of dissociation, क्या हो गया हमारे पास? I have now 2 moles of particles. And if I have 2 moles of particle, now if I will calculate the RLVP, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? What I am saying, if I will calculate the RLVP, तो हम 1 मोल लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? And if I determine experimentally, ठीक है? What I am doing, I am determining observe जो होगा, experimentally observe जो होगा, the relative lowering in vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point, और osmotic pressure that will be observed keeping in mind कितना solution को तो 2 moles मिले ना, तो observe करें कितना 2 मोल का हमको रिजल्ट मिलेगा. I was expecting 1 mole वाला रिजल्ट, लेकिन हमको कितना मिल रहा है 2 मोल वाला रिजल्ट. That is why the molar mass that I will calculate from these values will be different from the actual molar mass. It will be different from the actual molar mass. And why it is happening? It is only happening because of dissociation. Same case हो सकता है, मान लीजिए आपके पास I have something like this 2A molecules. तो हम कितना डाल रहे हैं? 2 moles डाल रहे हैं. But as soon as I add into the solution, ये दोनों क्या हो जाते हैं? Associate कर जाते हैं and they form A2. Now I have added 2 moles, but solution को कितना मिल रहा है? 1 mole. And due to this association, there will be a difference in the calculated and the observed molar mass. And in दोनों ही की वजह से जो भी molar mass आएगा उनको क्या बोलते हैं? Abnormal molar mass. It is known as abnormal molar mass. ठीक है? So please write the heading abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Please write substances undergoing association or dissociation in solution अच्छा एक काम कीजिए, for लिख लीजिए, for substances, ठीक है? For substances undergoing association or dissociation in solution, the molecular mass or the molar mass determined from colligative property is different from expected value. ठीक है? जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है? अलग आ रहा है. And this experimentally determined molar mass is known as abnormal molar mass. ठीक है? So this is the experimentally determined molar mass that is known as abnormal molar mass. Right, next. Van 't Hoff factor.
It is the ratio of experimentally determined colligative property to calculated value of colligative property for a solution. ठीक है, so for example Vanta factor को denote करते हैं I से, small I, and you can write I is equal to colligative property experimental divided by colligative property calculated. ठीक है, and all of you must remember colligative property क्या होता है? It is inversely proportional to the molar mass of the solute. अगर हम, if I define I in terms of molar mass of the solute, then what I will do, I will write molar mass that is calculated divided by molar mass that is experimental. ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास नॉर्मल मोलर मास और ये क्या हो गया आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास, है ना? कर सकते हैं इसको नॉर्मल molar mass divided by abnormal molar mass. Now the value of I that is coming for experimentally determined, it is happening because of dissociation or association. है ये जो experimentally क्या हो रहा है, association dissociation हो रहा है, calculated में हम लोग association dissociation नहीं देख रहे हैं. That is why you can write I is also equal to number of particles after association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. Now, because of this Van 't Hoff factor, whenever there is association and dissociation, we have to modify the equation of colligative property. Okay, so please write, this is important. Whenever you have ionic species, जहाँ पे भी association dissociation का सवाल आएगा, then you will use these following equations. Please write modification in equation of colligative property. ठीक है, in general जो हम लिखेंगे colligative property हम लोग क्या लिखेंगे modify करने के लिए, if I want the real answer, colligative property will be equal to I into the calculated colligative property. ठीक है, जो experimental आएगा ना, experimental को भी हम लोग calculate कैसे कर सकते हैं? If I know the I, then I can calculate. आप सबसे पहले बिना I को लेके calculate कीजिए, उसके बाद multiply कर दीजिए I से, you will get the experimental value. For example, if I talk about RLVP, relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure is what? It is P naught A minus P total divided by P naught A, that is equal to chi B. तो chi B जो था आपके पास, this was what? This was calculated. This was calculated RLVP. इसी में आप multiply कर दीजिए I. अब जो आंसर आएगा, that is going to be what? It is going to be now experimental value. Second आप लिख लीजिए elevation in boiling point. ठीक है, elevation in boiling point is what? Delta TB, that is equal to KB into M. This was the calculated. आप इसमें I multiply कर दीजिए, अब आपको जो आंसर आएगा that will be experimental. अब और क्या लिख सकते हैं इसके साथ साथ आप I into KB into WB into 1000
डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू WA, है ना। ये इक्वेशन याद होना चाहिए आप लोगों को। इसमें भी आपने सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, I मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF is equal to I into KF into M, and here I can write I into KF into WB into 1000 divided by the molar mass of the solute into the mass of solvent that we have added. And at last we have osmotic pressure. For osmotic pressure, equation बन जाएगा आपके पास pi will be equal to I into CRT. ठीक है, तो हम ये चीज डायरेक्टली बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे जो भी हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन एंड प्लीज लेट मी नो वंस यू आर डन। Is there anyone who is still writing? Please let me know. Otherwise, we will move forward and we'll do some question. Please write a question. Determine the value of I for following. ठीक है, नंबर 1 हम आपको बताते हैं, 2-3 हम करके बताते हैं आपको। ठीक है, NaCl. Now for NaCl we know NaCl will dissociate into Na positive and Cl negative. ठीक है, इसका मतलब I will be equal to, after dissociation 2 है, before dissociation 1 है, that means I will be equal to 2. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. What is the value of I? Number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. After dissociation we have 2 particles and before dissociation we have 1 particles. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Hiram, Yes. Fahad, Faiza, Rabia, समझ में आया सबको? तारीफ, राबिया, फहद, all of you understood this? Yes, sir. है ना? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए MgCl2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, here we will have Mg2 plus and we will have 2Cl negative. इस केस में I कितना आ जाएगा बताइए जरा, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I इन द चैट इन दिस केस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, डिवाइड कर दीजिए। फाइजा फिर से देखिए, फाइजा फिर से देखिए, once again फाइजा देखिए, how many particles after dissociation? Can you please turn your mic on, Faiza? Yes, Faiza, can you please turn your mic on? जी, how many Mg2 plus do we have? एक Mg2 plus हमारे पास, सही है Faiza? Yes, sir. Yes, sir. And how many chlorine do we have? 2. 2, तो कितने particles हो गए? 3, sir. And before dissociation? 1. 1, कितना हो गया? 1। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। Yes. 3, please write. K2SO4. K2SO4 में आपके पास 2 So, K, हाँ हाँ so बताइए। you wrote I equals to 1. I equals 0, सॉरी, K2 आपके पास 2 K पॉजिटिव एंड SO4 होगा SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें बताइए I की वैल्यू क्या आएगी, गिवन चैट। इस केस में भी क्या होगी, 3 वैल्यू। ठीक है ना, चलिए बाकी 4, 5, 6 कीजिए। हाँ, एक आपको लास्ट केस हम बता देते हैं।
If you have 2 moles of benzoic acid, what is benzoic acid? 6,6H5 COOH. ठीक है, then it is going to associate and it will form C6H5 COOH का whole twice. Now in this case, I after dissociation it is equal to how much? After dissociation is 2. No, after dissociation is we have 1. Before dissociation we have 2, that is equal to 0.5. ठीक है, बाकी 4, 5, 6 आप लोग बताइए. Yes, I'm correct for the fourth one. Yes, 5 1 is also correct. Very good. What about others? Okay, okay. Answer आ रहे हैं. 4 5 6. इरम 6th वाला फिर से ट्राई कीजिए जरा. 6th वाला फिर से ट्राई कीजिए. Pfizer 4th is correct. Sorry, 4th is correct. Pfizer 5th is also correct. इरम अब ठीक है 6th वाला. ठीक है, तो KCl आपने आंसर कर दिया. K plus Cl negative. I will be equal to 2. MgSO4 में देख लीजिए, Mg2 positive plus SO4 2 negative. I will be equal to how much? 2. Al2 whole twice and SO4 3. देखिए Al में 2 Al मिलेगा आपको, 3 positive charge plus you will get 3 SO4 with 2 negative charge. कितना हो गया? 2 और 1 3 5. I will be equal to 5. ठीक है, please write a note. Organic solutes such as ग्लूकोज, यूरिया हो गया आपके पास, है ना. यू हैव ग्लाइसिन, हाइड्रोजीन, etc. Do not associate or dissociate. Therefore, their I is always equal to 1. ठीक है, I की वैल्यू क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए? It will be always equal to. अच्छा, बेंजोइक एसिड जो है ना, it can dissociate also and associate also. आप इसका एक्सप्लेनेशन आएगा when you have aldehyde, ketones, carboxylic acid, organic chemistry केस में. When you have benzoic acid, अगर आप इसको बेंजीन में डालिएगा तब तो ये एसोसिएट करेगा, बट इफ यू ऐड बेंजोइक एसिड इन वाटर तब ये डिसोसिएट करता है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस विल कम इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप पढ़िएगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, नाउ फ्रॉम व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव हियर, प्लीज आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन जो बहुत बार ना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं. So you try this thing. उसके बाद इस सवाल कीजिएगा यहाँ पर. Which one of the following 0.1 molar aqueous solution will exhibit largest freezing point depression? 0.1 मोलर है, इसका मतलब कंसंट्रेशन तो सेम है सब में. व्हाट विल बी द डिफरेंस? आई का डिफरेंस होगा. बताइए आई सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा?
हाइड्रोजीन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन और KHSO4 में where will you have the highest value of I? देखिए हाइड्रोजीन में तो 1 हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज में भी 1 हो जाएगा, ग्लाइसिन में भी 1 हो जाएगा, KHSO4 में कितना होगा बताइए, KHSO4 में कितना होगा? I can write delta TF is directly proportional to I. ठीक है, so all of these are going to have I equal to 1. KHSO4 में you will have K positive and HSO4 negative. इस वजह से सबसे ज्यादा extent that will be present in the largest freezing point depression कहाँ पे होगा? Will be in the D case. Understood? Yes or no? हाँ जी. Yes, Oh, sir. D option. अच्छा D option क्या है? My bad. Chat में notification नहीं आया था. Fahad Faiza has given. Thank you. Next, do this one. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, द वन व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट डेल्टा एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, इफ द एलिवेशन इज ग्रेटर तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर. तो अगेन यहाँ पे भी हम वही बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आई. Yes, Rabia, I think that is correct. Yes, Iram, correct, very good. ठीक है, so you dissociate these things and see the answer. NaOH किसमें dissociate होगा, Na plus OH negative. Na2SO4 किसमें होगा, 2 Na positive and 1 SO4 2 negative. ठीक है, NH4 NO3 होगा आपके पास NH4 positive plus NO3 negative. KNO3 होगा आपके पास K plus positive and NO3 negative. It is also having 2, this is having 3, this is having 2 and this is having 2. So 2 will be the correct answer, है ना, D सही होगा because it is having the greatest value of I. Similarly, see this, which one of the following 0.6 molar aqueous solution has lowest freezing point? तो lowest freezing point किसका होगा, जिसका डेल्टा TF सबसे ज्यादा होगा. If the depression is greater, तो depression greater का क्या मतलब, freezing point नीचे चला गया. So again what you have to see, which is having highest delta TF directly proportional to I. Please answer this, guys. Yes, Tari is correct, very good. Yes, Faiza correct, very good. Yes, Rabia correct, very good. चलिए, this is correct. कितने लोगों ने आंसर किया है? See guys, again I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Al2SO4 होल थ्राइस है 5, this will be 1, Ki में हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 3. So largest value of I is in 8. ठीक है, so this will be the correct option. So we write a numerical now. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4. अब यहाँ पे इन्होंने K2SO4 दे दिया, that means they have also given you I. I will be equal to how much, tell me guys. Please write in chat. For K2SO4 I will be
What will be the value of I for K2SO4? Yes, 5 are correct. 3. And in 2 liters of water at 25 degrees Celsius. Assume that it is completely dissociated. Solution में देखिए, you will use the formula pi is equal to I into CRT. ठीक है, CRT. अब R की वैल्यू आप यहाँ पे 0.08314 ले सकते हैं in terms of लीटर बार. अच्छा, अब इस केस में देखिए आप K2SO4 पे यहाँ पे इन्होंने मोलर मास नहीं दिया हुआ है. मोलर मास हम आपको बता देते हैं. Mass of K2SO4 174 या 175 होता है. 174. ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे 25 मिलीग्राम दिया हुआ है. इससे क्या निकाल लीजिएगा? CRT निकाल लीजिएगा. Write it as 3 into the given mass divided by the molar mass. ठीक है, multiplied by into liters into 2 into. यहाँ पे लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन multiplied by (0.082) into टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 298. ठीक है, so 3 into 25 into 10 to the power minus 3 into 0.082 into 298. Given mass is 25 milligram divided by molar mass is 174 into 2. Calculate this value. Send your answer in chat, giving you guys 2 minutes for the calculation. Those who are not able to do, you will get the answer as 5.27 into 10 to the power minus 3 ATM. Since I have used 0.082, this will be answer will be coming in terms of ATM. अगर 0.08314 use करते हैं हम, so you will get the answer in terms of power.
depends on the values of R. So now moving on to next case in which we don't have complete as जैसे यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा है, when it is completely dissociated. ठीक है, so look at the case in which we have incomplete dissociation and incomplete association. ठीक है, for weak electron groups. Please see here, right? For weak electrolytes. Number one, we are first of all taking the case of dissociation. ठीक है, taking the case of dissociation, and we will let the degree of dissociation is equal to alpha. What we have taken? We have taken degree of dissociation as alpha. And what particles do we have? I have for my species is AX and BY. AX, BI. For example, Al2SO4 whole size में X की value 2 हो जाएगी और Y की value क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. So I have taken a species in which I have AX, BY type of. I have AX, BY type of species. So let us see the dissociation first of all. I took AX, BY. It will dissociate into X atoms of A, and it will have Y positive charge plus Y atoms of B, and this will have X negative charge. ठीक है? So charges are of no use here. आपके पास क्या देखना है? X and Y आपको देखना. These are important. How many moles of X we are getting? How many moles of Y we are getting? है ना? A or B. At time is equal to 0. I started with C concentration of AX, BY, and I had 0 ions X and Y because no dissociation has taken place. ठीक है? No dissociation has taken place. अच्छा, थोड़ा dissociation को समझाने के लिए I'm moving this step. For example, I say degree of dissociation. ठीक है? अच्छा, मान लीजिए आपसे ये कहते हैं if I have 100 moles of AB, इसमें से dissociate कितना कर रहा है? Dissociate करने के बाद आ रहा है आपके पास 50 AB, 50A and 50B. So what I can say from if I take 100 AB, then उसमें से कितना dissociate करेगा? 50% dissociate करेगा. Can I say that? Yes or no? Please tell me all of you. Oh, Iram got the answer. I don't know why Iram मेरा chat काम नहीं कर रहा है. Okay, I don't get any notification. Your answer seems correct. Just tell me about this one, guys. If I have 100 moles of AB, उसमें से 50 dissociate कर जा रहा है. So I will say the degree of dissociation is equal to how much? 50%. Can I say yes or no? Can I say that the degree of dissociation is 50%? Yes. है ना? 50%. इसका मतलब हमको ये पता चल गया alpha will be equal to 50%, मतलब 50 upon 100. That is क्या मतलब 0.5 है ना? आप जितना भी ले उसमें से कितना डिसोसिएट हो जाएगा? आधा डिसोसिएशन हो जाएगा. So when t is equal to 0, तो हमने आप लिया let us suppose 200. After some time t, let us say after some time t, इसमें से कितना डिसोसिएट हो जाएगा आपके पास? 200 लिया था तो 100 बचेगा and 100 moles of A and 100 moles of B मिल जाएगा. Is that clear? ऐसा please tell me. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, 100 को लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 200 जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था मल्टीप्लाइड बाय द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5. यस और नो प्लीज टेल मी. सही है? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा सा हम उसको और डिफरेंशिएट करते हैं. इफ यू हैड A2B3, आपको तो 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B मिलता है. उसके बाद देखते हैं कितना परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, राइट? कितना परसेंटेज हमारे पास क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. अच्छा, नाउ व्हेन आई हैव दिस केस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इन दिस केस आई कैन राइट कितना हमको A मिलेगा? आई विल गेट अल्फा अमाउंट ऑफ कितना मिलेगा हमको? 2 into what was the initial concentration? 200 into what is alpha? 0.5. ठीक है, बेसिकली देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं. When you did not have these coefficients, तब आपको कितना मिल रहा था?
यू आर गेटिंग 100 एंड 100. 100 का क्या मतलब हुआ? 100 का मतलब हुआ 200 into 0.5. एंड व्हेन यू हैव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A2B3 जब है मान लीजिए आपके पास, then in that case for each mole of A you are getting 2 moles of A, है ना? For each mole of A2B3 you are getting 2 moles of. इस केस में आपको यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के केस में. So this number will be multiplied by 2 and this number will be multiplied by 3 into 100. Now coming back to the generalized case of AX by, in this case after some time t, है ना, after some time t हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज होगा कुछ, right? Something will change. What will change? From this C alpha will dissociate. I am writing minus C alpha because वो dissociate हो जा रहा है, decrease हो रहा है. And how much amount of A will be formed? The amount of A that will be formed will be equal to X times C alpha. Y कितना, B कितना मिलेगा हमको? Y times C alpha मिलेगा. At equilibrium हम क्या कह सकते हैं? Our concentration will be C minus C alpha. The amount of A will be X into C alpha. The amount of Y will be Y into C alpha. This will be the concentration at equilibrium. अब I की वैल्यू क्या होती है? Van 't Hoff factor I is equal to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. Number of particles after dissociation कितना आ रहा है? C minus C into C minus C alpha plus X C alpha plus Y C alpha. ये सारे के सारे हमको कब मिल रहे हैं? आफ्टर डिसोसिएशन, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है. बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास क्या है? बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ हमारे पास है C. इनिशियली हमारे पास कितना था? सिर्फ वी हैड C. अच्छा, नाउ वी विल टेक C कॉमन. सब में क्या ले लेंगे? C कॉमन ले लेंगे. तो C यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा, यहाँ से C कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा X इंटू अल्फा. फ्रॉम हियर यू विल गेट Y इंटू अल्फा. ठीक है. I have taken C as, है ना, सबसे हमने क्या ले लिया? C कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय C. अब C और C कैंसिल हो गया ना, C here. I will be equal to, I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा. ठीक है. Now what I am going to take? I am going to take alpha common X और Y में से. I will have 1 minus alpha plus alpha into X plus Y. ठीक है. Alpha into X plus Y. Now I can write I is equal to 1 minus alpha into, 1 minus alpha plus alpha into N. What is N? N is equal to number of ions after dissociation, है ना. अगर मान लीजिए आपके पास A2B3 होता है तो क्या मिलेगा आपको? 2A plus 3B मिलेगा. तो 2 plus 3 that is equal to what? 5. ठीक है. तो N is what? Number of ions after dissociation. कितने ions आपको मिले after dissociation? Now what I can write? I is equal to 1 plus alpha कॉमन ले लिया हमने, N minus 1. N पॉजिटिव में और अल्फा में माइनस वाला नेगेटिव. अच्छा, now from this what you can also write? Alpha it is equal to, क्या लिख सकते हैं? I minus 1 upon N minus 1. ठीक है. 1 इधर चल जाएगा और N minus 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So please write this down for dissociation. मेन आपके पास ये दो इक्वेशन है. अगर आपको ये सारी चीजें नहीं भी याद हो, that is not a problem. You have to remember these two equation and you have to know what is the meaning of it.
Let me know once you're done, guys. Let me know once you're done writing this. नेक्स्ट आप लोग सिमिलर इक्वेशन आएगा आपके पास फॉर एसोसिएशन आल्सो. यहाँ पर एसोसिएशन के लिए था. फॉर एसोसिएशन we take degree of association as बीटा ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा, I is equal to, प्लीज लिख लीजिए, for association I is equal to 1 plus बीटा into 1 upon n minus 1. ठीक है. और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा विल बी इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1. What is the value of n? N is equal to number of particles before association. ठीक है. हम एक दो चीज और बता देते हैं. If there is some term such as dimer, there is something such as dimer. Please see, if you have dimer, then n will be equal to 2. If you have trimer, then in that case n will be equal to 3. ठीक है. अगर कोई बोले डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे. प्राइमर बन रहा है तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे. तो प्लीज राइट दिस फॉर एसोसिएशन. Done, guys. Yes or no, please tell me. Once you're done, you will write this question. Please write this. आपको बताते हैं मोलर मास कितना होगा इसका. Molar mass of CH2, then you have fluorine, and then you have COOH. The molar mass of fluoroacetic acid, it is equal to 78. Okay. Let us see this question now. 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 grams of water. The depression in freezing point of water was observed is 1 degree Celsius.
फास्ट चीजें लिख लेते हैं. Mass of solute that we have added, it is equal to 19.5 grams. Molar mass of the solute, it is equal to 78. Of solvent that we have is 500 grams, and the delta TF that we have, it is equal to how much? It is equal to 1 degree Celsius. और इसी को 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है. 1 degree Celsius लिखिए या 1 केल्विन. They're asking calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. चलिए, so first of all, अच्छा ये पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे? They're asking the Van 't Hoff factor I निकालना है आपको, and the next thing that you have to calculate is what? The next thing that you have to calculate is the dissociation constant. Dissociation constant क्या होता है? Ka. ठीक है? You have to calculate Ka. This is from chemical equilibrium of chapter 11. Ka निकालने के लिए कहा है. In this case, how are you going to calculate the Van 't Hoff factor? तो Van 't Hoff factor काफी आसान होगा इस केस में कैलकुलेट करना. I की वैल्यू ऐसे नहीं लिख दीजिएगा. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be equal to 2 CS2 F and CO नेगेटिव and H पॉजिटिव की वजह से 2 हो जाएगा. ऐसे नहीं लिखेगा. Van 't Hoff factor कैसे निकालेंगे? Please see. This is what observed or the experimental colligative property. ये जो आपको डिप्रेशन फिजिक्स पर निकला, क्या निकला? दिस इज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, और यू कैन डिवाइड इट बाय द कैलकुलेटेड वन. I is equal to what? Observed upon calculated. Observed तो आपके पास है कितना? 1 degree Celsius. कैलकुलेट कैसे निकालेंगे? You can write delta TF is equal to KF नहीं दिया हुआ ना इन्होंने. चलिए KF लिख लीजिए. KF for water is equal to 1.86 होता है. KF is equal to 1.86. ठीक है, केल्विन केजी पर मोल. KF into WB into 1000 divided by MB into WA. ठीक है, you will plug in the values, you will calculate the delta TF. This delta TF will be what? It will be calculated. ठीक है, so divide कर दीजिएगा, आपको Van 't Hoff factor मिल जाएगा. So please calculate the delta TF and उसके बाद I को calculate कीजिए. I will give you guys 3 minutes. First of all, calculate the delta TF.
No one got any answer. You have all the values ना, kf है आपके पास. You also have the value of WB. You also have 1000 MB and W. Everything is present, no? ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा सर. डेल्टा टीएफ तो दिया हुआ है, फिर क्या कैलकुलेट करें? डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व दिया हुआ है, ठीक है ना? हम लोग कैलकुलेशन वाला कर रहे हैं. तारीफ, आर यू श्योर? I think so, sir. I'm getting that. Let me see. KF is 1.86 multiplied by 19.5 multiplied by 1000 divided by molar mass is 78 into 500. 0.93 आ रहा है. You see, delta T was 0.93 and I will be equal to observed is 1 divided by calculated is 0.93. Okay. So this will come out to be 1.075. This is the Van Hoff factor. Yes, Fahad, correct, very good. I is equal to 1.075. ठीक है, तो ये आपको क्या निकल गया? ये आपका निकल गया Van Hoff factor. Next, what they are asking? They are asking the dissociation constant. ठीक है, फ्लोरोएसिटिक एसिड का पहले फॉर्मूला लेते हैं. CH2FCOH. CH2FCOOH is going to give you CH2FCOO negative and H positive. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा. इनिशियली आपके पास होगा सेम वही चीज, कंसंट्रेशन C यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0. चेंज जो होगा, दिस इज टाइम इज इक्वल टू 0 और टाइम इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं पता है? इनिशियल लिख सकते हैं. इनिशियल चेंज विल बी माइनस C अल्फा. यहाँ पे the stoichiometric coefficient is 1, तो 1 into C अल्फा हो जाएगा. C अल्फा ही हो जाएगा एंड हाइड्रोजन के लिए भी आपके पास C अल्फा हो जाएगा. इक्विलिब्रियम का मतलब इनिशियल चेंज के बाद जो कुछ भी बचा है उसमें, तो C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास C अल्फा और ये हो जाएगा आपके पास C अल्फा. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस एज अच्छा, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, है ना? तो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा विल बी इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन I minus 1 upon N minus 1. I minus 1 upon N minus 1. I is 0.93. 1.075. 1.075 minus 1 divided by N. N क्या है आपके पास? 2 minus 1. So this will be equal to 0.075. This is alpha. ठीक है, alpha कितना आ रहा है आपके पास? Alpha आ रहा है 0.075. Now from here you can easily calculate the K alpha. Sorry, not K alpha, that is Ka, which is equal to products upon reactant. C alpha into C alpha divided by C minus C alpha. C alpha को क्या लिख सकते हैं? C square and alpha square. And यहाँ पे C को कॉमन ले लिया आपने, 1 minus alpha कर दिया. C and C will cancel out and you will get K as C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आपके पास what are the values that we have? What is the number of moles that we have? मोलालिटी क्या आई थी हमारे पास? मोलालिटी आपने कैलकुलेट नहीं किया था ना. मोलालिटी वुड बी 19.5 grams in 500 grams and here we have 78. 19.5 upon 78 into 2. 19.5 into 2 कितना हो जाएगा? 39 upon 78. This will be equal to 0.5. ठीक है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू 0.5. तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आप मोलालिटी को भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में. ठीक है, हियर वी आर टेकिंग मोलालिटी एज द कंसंट्रेशन और आपको मिल जाएगा 0.5 इनटू अल्फा स्क्वायर इज 0.075 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.075.
ठीक है. So if you calculate this value, it is going to come out as 3.07 into 10 to the power minus 3. 3.07 into 10 to the power minus 3 आएगा आंसर. Let me see. 0.5 into 0.075 into 0.075 divided by 1 minus 0.075. It's coming as 3.04 hour, not 7. 3.04 into 10 to the power minus 3. So first we calculated I. I कैसे calculate किया? By calculating the delta TF. Delta TF calculated. ठीक है, I निकल गया. I से हम लोगों ने क्या calculate किया? फिर alpha calculate किया. Alpha से फिर हमने क्या calculate किया? Ka calculate. ठीक है, तो ये मल्टी कंसेप्चुअल सवाल था. In which we had to determine many things. We had to determine delta TF. उससे फिर आपको I मिलता. I से फिर आपको alpha मिलता. Alpha से फिर आपको Ka मिलता. Dissociation constant मिलता. Please write this down. Moving on. Write a note. Relationship between dissociation constant Ka and alpha. ठीक है, alpha dissociation constant में क्या relationship होता है? So please write Ka is equal to C alpha square. ठीक है, so if you have been given the Ka and you have to calculate the value of alpha, तो आप कैसे calculate कीजिएगा? Now alpha square will be equal to Ka upon C and alpha will be equal to root of Ka upon C. ठीक है, this is for weak electrolytes. Can you please note this down? This is it for today है ना. And also आप लोग वेट कीजिएगा प्लीज. आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, है ना. सो प्लीज अटेम्प्ट द टेस्ट. 5 सवाल रहते हैं बस. ठीक है, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए. बाद में फिर वापस से आपको ये सारे टेस्ट नहीं मिलेंगे कभी देने के लिए. तो आगे रुक जाया कीजिए हमेशा. ठीक है, आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स, अभी 5-10 मिनट्स. अभी रिवाइज कर लीजिए एक बार एंड उसके बाद फिर आप लोग आराम से 5 सवाल का जो टेस्ट होता है 5 सवाल का टेस्ट दे दीजिए. ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट नाउ सिंस द चैप्टर इज कंप्लीट NCERT. ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, चाहे आपके पास एग्जाम्पलर के सवाल हो गए. ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर नीट एंड जेई, हमने सॉल्यूशन में सारे के सारे जो भी पोर्शंस है ना हमने कवर करा दिए नीट और जेई दोनों जगह. इनके अलावा कुछ नहीं आता है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग PYQs ऑफ नीट और जेई देन ऑल्सो इट इज फाइन. ठीक है, आप जब भी हो ना उसको प्लीज भेज दीजिए.
NCERT एंड एग्जाम्पलर ट्राई कीजिए दैट यू डू इट दिस वीक, ठीक है, बिकॉज ऑन थर्सडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें तो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं होगा, है ना, उसमें बहुत ज्यादा कोई एडवांस टॉपिक्स भी नहीं। दैट इज वाई इस हफ्ते तक आपके पास टाइम है सॉल्यूशंस को कंप्लीट करने का। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, टेक्स्ट बुक के इनसाइड क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर का अगर सवाल लगाते हैं आप तो एग्जाम्पलर के, उसके बाद जानते हैं आपको कब टाइम मिलेगा, जब आपका हाफ ईयरली आएगा तब आप सॉल्यूशंस को दोबारा देखने का टाइम मिलेगा, उसके बीच में आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इल्ला माशाल्लाह, हाँ अगर आपके पास अभी गर्मी छुट्टी आ गई तो उसमें आपने आकर देख लिया तो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम टू सी एनी क्वेश्चंस। अच्छा, ऑल्सो बिफोर फ्राइडे, दिस वीक का मतलब क्या, बिफोर फ्राइडे, ठीक है, बिकॉज ऑन फ्राइडे आई विल टेक अ टेस्ट ऑन सॉल्यूशंस। कब होगा, फ्राइडे को, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीट फुल चैप्टर टेस्ट होगा एंड आई विल मैसेज यू गाइस द फॉर्मेट की एमसीक्यूज होंगे, उसमें कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें और कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, सब टाइप का सवाल होगा उसमें। तो बी समथिंग लाइक मॉक टेस्ट जिसमें आपके पास एमसीक्यूज भी होगा, एमसीक्यूज में आपके पास एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन दोनों ही साथ में होगा। देयर विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, देयर विल बी 5 मार्क्स क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का सवाल भी होगा जो दैट विल बी केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अब सीबीएसई एग्जाम्स में देने लगा है, ठीक है। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर द फ्राइडे टेस्ट, इसको जरूर से दीजिएगा आप लोग। एंड ऑल्सो फ्राइडे वाला जो टेस्ट होगा 2 स्लॉट्स होंगे उसके, देयर विल बी अ टेस्ट ऑन द मॉर्निंग एंड द सेम टेस्ट, सेम पेपर वाला टेस्ट होगा आपके पास इवनिंग में, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक टाइमिंग पे आप लॉग इन करके, मतलब आपको मीटिंग लिंक मिलेगा, यू विल ज्वाइन दैट मीटिंग लिंक एंड यू कैन डू द पेपर, ठीक है। मॉर्निंग होगा एक और एक इवनिंग में, जो भी टाइम आपको सूट करे आप उसमें दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज दे दीजिए, ठीक है। अभी से स्टार्ट कीजिए दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ द टेस्ट।